Good evening, everyone. Respected Shri Ram Madhav, Professor Dr. Alka Chawla, Professor in charge Campus Law Center, Dr. Gunjan Gupta, Professor Campus Law Center, Dr. Seema Singh, Faculty Convener Debate and Discussion Society, respected faculty members, students, and all the viewers who have joined us today. I, Toshita Joshi, on behalf of Campus Law Center, extend to you a very warm welcome to Campus Law Center's National Youth Day Keynote Address. National Youth Day is observed in honor of the birth anniversary of Swami Vivekananda to underscore Swami Ji's ideals, which continue to be the guiding light of the society. Swami Vivekananda's ideas about tolerance, religious acceptance, and the need to abolish all sorts of fanaticism finds relevance even today. Discarding the idea of religious supremacy, he propagated a message of universal brotherhood. Swami Vivekananda's iconic speech at the World Parliament of Religion in Chicago went on to establish him as one of the leading figures whose ideas are still revered around the world. We are honored to host Shri Ram Madhav, a best-selling author and a leading thinker, delivering his keynote address on the topic Relevance of Vivekananda for Youth in Modern India. Shri Ram Madhav is a member of the Governing Council of India Foundation and is a leading personality in the field of political philosophy and Indian foreign policy. Sir is a prolific author and a columnist, and his books like Uneasy Neighbors, Because India Comes First, among others, have left a deep impact not only in India but also internationally. Sir has represented the Indian philosophy globally through prestigious forums like Raisina Dialogue, BRICS Political Forum, World Peace Conference. It is my absolute honor to welcome you, sir. We thank you for accepting our invitation. I now request Dr. Gunjan Gupta, Professor, Campus Law Center, to kindly welcome the guest and address us with her welcome remarks. Over to you, ma'am. Good evening to all the teachers and students present here. I, on behalf of Campus Law Center, welcome Shri Ram Madhav Ji as the chief guest for today's session. Today, we are celebrating National Youth Day to honor the life and teachings of one of the greatest philosophers, Swami Vivekananda Ji. The day celebrates Vivekananda's inspirational ideas and how the youth will be benefited from them. Swami Vivekananda Ji wanted the youth to take a lead in removing all social malice. The late spiritual leader believed that working for any social change required massive energy and spirit. Hence, he exhorted the youth to amplify both their mental energies and physical fitness. The spiritual leader has said, and I quote, "Arise, awake, and stop, not till the goal is reached." These words are what the modern day youth needs to make this country great. The chief disciple of the 19th century mystic Ramakrishna Paramahansa introduced the world to the Indian philosophies of Vedanta and Yoga. He's seen a major force behind the revival of Hinduism in India and is credited with creating interfaith awareness. In 1881, he first met Ramakrishna Paramahansa, following which he journeyed down the path of spirituality. Vivekananda Ji, who founded the Ramakrishna Math and the Ramakrishna Mission, is also credited with instilling a sense of nationalism in people in a colonial India. Both these important centers for the teachings of philosophy and principles associated with the Vedanta. Vivekananda Ji wrote 4 classics: Gyan Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Raj Yoga, which are his treatises on Hindu philosophy and the teachings of Vedanta. In addition, his ideas and philosophy come through in many lectures he delivered, the letters he wrote to his friends and disciples, poems and songs composed by him. Vivekananda Ji is best known for his famous 1893 speech where he introduced Hinduism to the Western world in Chicago. With that note, I would like to add and give a message to the students by his quotation that strength is life, weakness is death.
Take risks in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. The more we come out and do good to others, the more our hearts will be purified and God will be in them. Without taking too much time, I would like to invite Shri Ram Madhav ji today for the session and to give the keynote. Thank you. Namaskar. Thank you, Professor Gupta. My namaskars and greetings to all the participants of this very important webinar on Swami Vivekananda on his birth anniversary. I thank the law faculty or law school of the Delhi University for inviting me to give this address today. I would have loved to have it in a physical format, in-person format, but nevertheless, the situation is such that we could only use this technology to interact with each other. Nevertheless, it's important that we keep remembering this great personality, not just Swami Vivekananda alone, but all the great personalities who have shaped our country, its present, and of course, those who will play an important role in shaping our future. We are into the 75th year of our independence. आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है. तो हमारे आजादी को शेप करने वाले, those who were physically or in person or personally involved in the freedom struggle, but also many more who played a very crucial role inspiring millions and millions to plunge into that freedom movement. All those great persons should be remembered by the grateful nation, at least in this year of Amrit Mahotsav. I compliment the faculty, the leaders of this institution for taking initiative in hosting this event. भारत के दो परिचय होते हैं. One introduction about India is that we are a very ancient nation, a nation with close to more than 5 millennia history, great civilization, very ancient civilization, etc. A nation of great antiquity. एक परिचय ये होता है. There is a very opposite introduction about India also, and that is that India is a nation of youngsters, a very youthful nation. हमारे देश के 58% population below 35 years age का है. हालांकि आज युवा कौन है इसके ऊपर बहुत बहस चलता है. 50 साल तक भी पॉलिटिक्स में नेता युवा ही रहता है. बट अगर 30-35 इयर्स का भी एज हम लेते हैं तो भारत के 58% पीपल आर यूथफुल यंग पॉपुलेशन. So that makes India a very youthful country also. It's an ancient nation on one hand and a nation bustling with young population on the other hand. If there is any one leader who bridges these two characters of our country, characteristics of our nation, it is none other than Swami Vivekananda. A leader, a spiritual giant who represented the ancient Indian greatness before the entire world, but a leader who represented the youthfulness of this nation before this country and the countrymen. That is the reason why we chose Swami Vivekananda to represent the National Youth Day. India has many young leaders who have contributed enormously to its building and rebuilding. But of all those leaders, if a saint, if a saffron-clad sannyasi was chosen to be the epitome of youthfulness, an inspiration to the youth of this country, we can understand how he bridged these two different worlds, the world of the ancient and the world of the modern youngsters. Swami Vivekananda, the very name of him, sends a galvanizing shock of strength in our bodies.
उनका नाम ही एक बिजली जैसा तेज हमारे शरीर में दौड़ाता है। आई एम द proudest person ever born. This was Swami Vivekananda's proclamation. I'm the proudest man. But he hastens to add that my pride is not due to myself. It's not because I'm a handsome person. Vivekananda was a very handsome personality. It's not because I'm a great scholar. He was a great scholar. It's not because I speak a fluent English, good English. He was, of course, a great orator. But Vivekananda says, I am proud. My pride comes from the fact that I belong to a great country, great culture, and great civilization. My pride is due to my ancestry. Today, when we remember Vivekananda, the first and foremost thing that we must remember is the pride he has held in India's age-old civilizational historical past. It is fashionable to equate modernity with cutting off from our past. भूतकाल का तिरस्कार ही आधुनिकता समझना आज के दिन में फैशन माना जाता है। पर विवेकानंद जी का एक बड़ा संदेश हम सबको है कि भूतकाल को तिरस्कार मत करो, डोंट रिजेक्ट इट, फील प्राउड अबाउट इट। विवेकानंद जी के 3 बड़े संदेश को हम सब युवा लोग हमेशा याद रखना चाहिए। The first and foremost was this, the pride in the past. But when I say that, I must also admit that past में कोई mistakes नहीं हुआ हो या past में कोई याद रखने लायक चीज कुछ नहीं है, ये बात को मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। There are a few things in the past that were mistakes, that were wrongs. But even remembering them is important in order to ensure that we don't repeat those mistakes. But those great aspects of your past must always be respected, cherished, remembered in our journey towards future. So pride in the past is one quality that the youth of the country should imbibe. But then that's not enough. You cannot always live in the past. That's why Vivekananda said, the second important quality that we should imbibe is the pain about the present. वर्तमान की पीड़ा चाहिए। वर्तमान की पीड़ा का अर्थ होता है कि जो हमारे चारों तरफ जो दृश्य देखने को मिलता है, वो देखकर मन में भावना होनी चाहिए। You should feel. चारों ओर कई चीजें हमारी घटते रहती है। वर्तमान में हमारे सामने एक दृश्य खड़ा है, उसमें कई अच्छी चीजें हैं, उसका आनंद तो लेंगे ही। जब आर्थिक उन्नति होती है, अच्छा लगता है। बुलेट ट्रेन आता है, अच्छा लगता है। पर क्या साथ ही साथ चारों ओर जो कुछ चीजें इस देश के सामान्य लोगों के साथ हो रहे हैं, उसमें जो पीड़ा देने वाली चीज होते हैं, उससे आपको पीड़ा होती है क्या? विवेकानंद ने तो स्ट्रेट एक प्रश्न पूछा है सब युवाओं को इस वर्तमान के संदर्भ में, अबाउट द प्रेजेंट। डू यू फील? डू यू फील फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट that millions are starving today and millions have been starving for ages? आपके दिल के अंदर से ये पीड़ा आपको होती है क्या कि जिस देश को अन्नपूर्णा कहते हैं, रत्नगर्भा कहते हैं, उस देश में करोड़ों लोग आज भी गरीबी का जीवन जीते हैं? हाँ, ये अलग बात है। जब विवेकानंद जी ने ये बात बोली थी, उस समय इस देश की गरीबी का चित्र कुछ अलग था।
आज 70-75 साल के आजादी के बाद चित्र में काफी अंतर आया है, पर आज भी देश के अंदर, समाज के अंदर इनइक्वालिटीज, असमानताएं भरी पड़ी है। आज भी करोड़ों लोग एक गरीबी का जीवन इस देश में जीते हैं, अज्ञान का जीवन जीते हैं, जाति पंथ संप्रदाय के शिकार होते हैं, संघर्ष होता है। आज भी हम जाति से लड़ते हैं। आज देश में चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव का एक ही आधार बनता है जाति। समाज को तोड़ने वाले सारे चीज इस देश के राजनीति का आधार बन जाते हैं। जब वो दृश्य देखते हैं तो क्या मन में पीड़ा होता है? प्रश्न उन घटनाओं का नहीं है, घटना तो होता है। आप सड़क पे जाते हो, सामने तो गरीब दिखता है, कार में जा रहे हो तो शीशा ऊपर कर देते हो। ये देश कब सुधरेगा इतना बोलोगे, पर उससे ज्यादा कभी पीड़ा भी होती है क्या कि यार मेरे देश के लोग आज भी क्यों चौराहे पर भीख मांगने को मजबूर है? क्यों इस देश में आज भी गरीबी है? क्यों इस देश में आज भी इस प्रकार अज्ञान है? क्यों लोग लड़ते हैं? क्यों इस देश में विभाजन है? ये पीड़ा होती है क्या? डू यू फील? फील यानी ऐसा वैसा फील नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, सर मैं देखता हूं तो अच्छा लेख लिखता हूं, ऐसा नहीं। डज इट मेक यू रेस्टलेस? डज इट मेक यू स्लीपलेस? आपको रात को नींद नहीं आता है? हैज इट एंटर्ड इनटू योर ब्लड, coursing through your veins, become almost consonant with your heartbeat? आपका दिल जैसे धड़कता है ऐसे इस देश की दुस्थिति को देखकर आपका दिल में वो पीड़ा भी धड़कती है क्या? Have you become almost mad with that one idea of the misery of your people? Forgot about your name, your fame, your money, your prosperity. Have you become mad? That intense feeling about the present, वर्तमान की उस प्रकार की अत्यंत पीड़ा आज युवाओं को चाहिए। तो भूतकाल का गौरव, वर्तमान की पीड़ा, पर साथ ही साथ मेरे पास पीड़ा भी है, गौरव भी है। एक किताब लिखूंगा, या मुझे तो आज अवसर मिल गया आपको भाषण देने का, इस प्रकार आप हमको अवसर दो, मैं भी 1 घंटा भाषण मारूंगा, वो नहीं। इस पीड़ा के साथ साथ आपके सामने क्या भविष्य का कोई स्वप्न है? डू यू हैव एनी विजन फॉर द फ्यूचर? द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट इज रिक्वायर्ड टुडे इज वी नीड अ विजन फॉर द फ्यूचर। आज युवाओं को वैसे तो अपने वैयक्तिक जीवन का तो स्वप्न होता है, होना भी चाहिए। हम कहां पहुंचना है व्यक्तिगत जीवन में, इसका एक स्वप्न लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। वो स्वप्न भी भव्य होना चाहिए। Those who cannot even dream about their future can never achieve anything. First of all, dream what you want to become. Then one day, probably you will reach there or halfway there. But also, do you dream about your nation, your society? Where should it reach? समाज, देश के भविष्य का भी स्वप्न लेकर चलना होगा। वैयक्तिक स्वप्न जितना महत्व का होता है, उतना ही महत्व ये राष्ट्र के नाते इस देश को कहां पहुंचाना है, वो स्वप्न का भी उतना ही महत्व होता है। बल्कि मैं कहता हूं उसका महत्व और ज्यादा होता है। इसी कार्यक्रम में अगर मैं नहीं हूं, पर कोई अमेरिका का, मैं कोई रेसिस्ट कमेंट नहीं कर रहा हूं, पर समझने के लिए ये बात कह रहा हूं कि अमेरिका का कोई व्हाइट आदमी को लाके आपके प्रोफेसर गुंजन जी खड़ा कर देते हैं, तो शायद मेरे से ज्यादा अटेंशन से आप उनका सुनते हैं। पूरा सुनने के बाद आप पूछेंगे क्या है ये महापुरुष, क्या है अमेरिका में, तो बोला जाता है कि ये तो कोई शिकागो शहर में ही ओन्स बिग लॉन्ड्री। गौरव से सुनते हैं। क्या भारत का कोई सामान्य धोबी को आप लाके भाषण दिला सकते हैं आपके यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम में?
अमेरिका का लॉन्ड्री ओनर है ना हमारा यहाँ धोबी, वही तो है ना, इज द धोबी ऑफ अमेरिका. But because America is great, America's Dhobi also gets respect all over the world. If we individually become great, we get respect. But if nations become great, the last man of the nation also becomes great. So our effort should be, हमारा प्रयास स्वयं को महान बनाना जरूर है, बनना चाहिए. हर व्यक्ति एक उपलब्धि वाला व्यक्ति बनना चाहिए जीवन में. पर साथ साथ राष्ट्र को, देश को भी कैसे हम एक सामर्थ्य संपन्न, कैसे एक महत्वपूर्ण सशक्त राष्ट्र बनाएंगे, गौरवशाली राष्ट्र बनाएंगे, इसका स्वप्न लेकर चलना पड़ेगा. तो स्वामी जी के जो 3 संदेश है, भूतकाल का गौरव रखो, डोंट कट ऑफ फ्रॉम द रूट्स ऑफ योर सिविलाइजेशन, योर कल्चर, योर नेशन. वर्तमान की पीड़ा रखो, आनंद मौज मस्ती में मत रहो, पीड़ा रखो, और भविष्य का स्वप्न लेकर चलो. यह संदेश लेकर आज के इस देश के युवा को आगे बढ़ना होगा. भारत का युवा वैसे तो बहुत ही सामर्थ्य संपन्न है. कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक शोध हुआ, उसमें प्रस्तावित हुआ कि IQ ऑफ एन एवरेज इंडियन, सामान्य भारतीय का जो इंटेलिजेंस कोशेंट होता है ना, इंटेलिजेंस कोशेंट इज व्हाट? इट्स जस्ट अबाउट आवर बुद्धिमत्ता, हमारी बुद्धि. IQ of an average Indian is higher than the IQ of any other person of any other race. बुद्धि है, सामर्थ्य है, इसका प्रूफ भी है दुनिया में. आज एक व्हाट्सएप घूमता है दुनिया भर में. अमेरिका के टॉप 10 कॉर्पोरेट्स में हेड के स्थान पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के स्थान पर आपको इंडियंस दिखते हैं. नासा जैसे संगठन में, अमेरिका का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में नंबर पे पहुंच जाते हैं. नंबर 1 इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि अमेरिका के बॉर्न सिटीजन नहीं है. पर एक राष्ट्र के नाते हम उस ऊंचाई तक अभी पहुंचे हैं क्या? अभी पहुंचना बाकी है. उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ना होगा. बढ़ना है तो उसका जो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन है, हमें स्वामी जी के संदेश, स्वामी जी के विचारों से लेना चाहिए. आज इस देश के लिए ऐसे युवा चाहिए जो those who are rooted in the India's ethos, those who have pride about their Indianness of political identity नहीं कह रहा हूं. हजारों वर्षों का इस देश का महान सभ्यता, संस्कृति का हम भी एक प्राउड पार्टनर है. जैसे विवेकानंद ने कहा ना, आई एम द प्राउडेस्ट पर्सन बिकॉज आई बिलोंग टू ए ग्रेट एंसेस्ट्री. पर साथ ही साथ एकदम भविष्य को लेकर एक आधुनिक से आधुनिक सोचने वाले युवा चाहिए. भारत को बहुत जल्दी हम इस देश के तमाम समस्याओं से बाहर लाना पड़ेगा. 75 साल हो गए इस देश की आजादी को. 75 साल बाद भी आज भी इस देश के पर कैपिटा इनकम में हम पिछड़े हुए हैं. ये अलग बात है, पॉलिटिक्स में हमेशा अच्छे डेटा दिया जाता है. हमें कहा जाता है कि सच भी है कि टुडे वी आर द वर्ल्ड्स 5th और 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी. बट वो उसका कोई मायना नहीं है, क्योंकि पर कैपिटा जीडीपी में हम 152nd पोजीशन पर है. वार्षिक आम आदमी की जो वार्षिक आमदनी है उसकी तुलना में 152nd है हम. वो आज निर्माण होना है. उसके लिए भारत को एक आधुनिक विकसित देश ग्रास रूट्स में बनाना पड़ेगा. उसके लिए हर युवा को आज सोचना पड़ेगा. प्रधानमंत्री इसलिए आत्मनिर्भर भारत की बात कह रहे हैं. आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि ग्रास रूट्स में प्रॉस्पेरिटी खड़ा करना पड़ेगा. तो उस दिशा में सोचने वाले युवा आज चाहिए. इसलिए केवल स्वप्न लेकर स्वप्नों के जीवन में दुनिया में जीना नहीं है, उस स्वप्न की दिशा में कदम बढ़ाने वाले भी चाहिए.
विवेकानंद जी कहते थे भाई इस देश में किसी को भी वो देशभक्त नहीं है ये कहना संभव नहीं है। हालांकि आजकल हम कभी कभी नेशनलिज्म का पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट्स लेकर घूमते हैं, इसको पेट्रियट उसको पेट्रियट देते रहते हैं, बट इस देश में किसी को भी पेट्रियट नहीं है प्रूव करना संभव नहीं है। हर एक के पास प्रूफ है। आप किसी से पूछिए भाई तुम क्या देशभक्त हो, तो जेब में से एक रिसीट निकालेगा, सर देखिए जब वहां केरला में फ्लड्स आया तो मैंने तो मेरा 1 महीने का सैलरी 1 दिन का सैलरी मैंने डोनेट किया। आप मेरे पेट्रियटिज्म को क्वेश्चन कर रहे हो? या कोई कहेगा कि वो याद है जब सुनामी आया तो हमने तो हमारे मोहल्ला में चावल इकट्ठा करके तमिलनाडु भेजे है। या दिल्ली में फायर एक्सीडेंट हुआ तो 1000 घर जल गए तो उन जो घरों के जो लोग हैं उनके लिए हमने तो कंबल और खाना वगैरह इकट्ठा करके दिए हैं। आप हमारे पेट्रियटिज्म को क्वेश्चन कर रहे हैं। भारत में हर व्यक्ति को अपना पेट्रियटिज्म प्रूव करने के लिए कोई ना कोई प्रमाण मिलेगा, बट समस्या ये है कि वो महापुरुष को देशभक्त बनना है तो या तो कहीं बाढ़ आना पड़ेगा, या तो कहीं सुनामी आना पड़ेगा, या कहीं घर जल जाना पड़ेगा, तब देशभक्त है, which is called part time patriotism। देश पार्ट टाइम पेट्रियटिज्म से नहीं बनते हैं। देश पेट्रियटिज्म जिस देश के समाज के युवाओं में एक सहज जीवन का एक लक्षण होता है, सहज लक्षण होता है, उस प्रकार के समाज में ही, उस प्रकार के युवाओं के साथ द्वारा ही राष्ट्रों का निर्माण होता है, देशों का निर्माण होता है। हमारे साथ ही आजादी का जीवन शुरू करने वाले हमारे अन्य देशों का जीवन देखिए। इजराइल, हम 1947 में आजाद हुए तो इजराइल ने 1948 में आजादी प्राप्त की है। जापान 1945 में पूरा धराशाही हो गई है, हमारे साथ ही जीवन शुरू किया है लगभग। और चीन भले ही सही उदाहरण नहीं हमारे साथ, क्योंकि चीन का एक विशेष प्रकार का राजनीतिक तंत्र है जो अनुकरणीय बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी हमारे साथ ही तो प्रस्थान शुरू किया। आज वो देश कहां पहुंच गए? हम क्यों इस प्रक्रिया में पीछे रह जाते हैं? इसका एक कारण है, ये भी मैं विवेकानंद के ही बातों में कहता हूं। एक बार विवेकानंद जी अपने जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स की बात गुंजन जी ने कहा था, वो भाषण के बाद 1893 के भाषण के बाद वे लंदन गए थे 1896 में। तो लंदन में एक दिन भारत की महान संस्कृति, सभ्यता, हमारे वेद पुराण इतिहासों के बारे में बड़ा भाषण, उनका सिलसिला श्रृंखला चलता था। तो एक दिन एक स्थानीय व्यक्ति ने खड़ा होकर एक प्रश्न पूछा स्वामी जी से, स्वामी जी आप तो कह रहे हैं कि आपका धर्म इतना महान है, संस्कृति इतना महान है, आपके पूर्वज इतने महान लोग थे, तो आपके सारे इतने महान है तो आपका देश ऐसा क्यों है? आप क्यों गरीबी में हो? आप क्यों इसमें हो, दूसरों के शासन में, अंग्रेजों के शासन में क्यों हो? तो विवेकानंद एक क्षण मौन रह गए। फिर विवेकानंद जी ने उत्तर दिया, देखो मित्र, व्हाट यू से इज वेरी राइट। माय कल्चर, माय सिविलाइजेशन, माय वैल्यू सिस्टम, माय रिलीजन, दे वेरी ग्रेट, बट क्या करूं, माय पीपल हैव बिकम लेथार्जिक। मेरे लोग है ना, ये लेथार्जिक बन गए हैं, आलसी बन गए हैं, आत्म केंद्रित बन गए हैं। मुझे इनको इस आत्म केंद्रित आलसी जीवन से बाहर लाना होगा, तभी जाकर इस देश का वो जो पुनरुत्थान है, रिजुवनेशन है, वो संभव होगा। तो हमें इस आलसी आत्म केंद्रित जीवन से बाहर आने का जो प्रेरणा है वो स्वामी जी से लेना होगा। आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद 4 साल अमेरिका में थे, तो भाषण, भारत की संस्कृति, इसका धर्म, इसके बारे में बड़ा भाषण दिए थे। पर जब वो भारत में वापस आए या वहां से भारत के लोगों को संबोधित कभी करते थे तो वो ये भाषण नहीं देते थे। उल्टा उनका भाषण भारत के लोगों को हमेशा कोसने का, हमेशा डांटने का,
हमेशा उनके दिमाग ठीक करने का होता था। उन्होंने तो यहां तक एक समाज के एक वर्ग के लोगों को बोल दिया कि मैं सोचता हूं कि तुम लोग पागल है, भारत के लोगों के बारे में ये पागल खाना लगता है, ऐसा बोल दिया। जहां जाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर लोगों को मंदिर में प्रवेश को भी रोका जा रहा था, तो उस समाज को देखकर विवेकानंद, ही डिड नॉट मीन्स हिज वर्ड्स, ही सेड इट्स लाइक ए मेंटल असाइलम, लुनेटिक असाइलम। रास्ते में जब टोक्यो में रुके थे, अमेरिका जाते समय शिप में जा रहे थे, तो टोक्यो में रुके थे, तो टोक्यो का इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने के बाद पत्र लिखे भारत को, भारत के युवाओं को कहा था, अरे तुम लोग कहां जी रहे हो, इंडस्ट्रियलाइज करो देश को, आधुनिक बनो, बी मॉडर्न, बी इंडस्ट्रियलाइज इंडिया। जब भारत आए थे तो कोलंबो में जहाज उतरे थे, कोलंबो से लेकर अल्मोड़ा उत्तराखंड में, वहां तक उनका एक यात्रा चली। उस यात्रा में उन्होंने हर जगह भाषण दिया, तो हर भाषण वो यही इसी बात से शुरू करते थे, ओ माय डियर यंग मेन एंड वीमेन ऑफ दिस कंट्री, ऑल माय होप्स लाई ऑन यू। आप मेरे सारे आशाओं के केंद्र है, ओ देश के युवाओं, मेरी सारी आशा आपके ऊपर है। क्या आशा थी वो? भाई इस देश को आधुनिक बनाना है, इस देश को विकसित बनाना है, इस देश को संगठित रखना है, यूनाइटेड, प्रोस्परस, स्ट्रांग, ऐसा भारत को बनाना है। विवेकानंद जी को याद करते समय दोनों चीजों को याद करना है कि इस देश की जो प्राचीन परंपरा, सभ्यता, उसके अंदर के जो महान चीज, जिनका एक परिचय विश्व को उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में दिया था, वो एक बहुत बड़ा पक्ष है, उससे हमेशा हमको गर्व लेना चाहिए। जैसा अभी प्रारंभ में कहा गया था, तोशिता या किसी ने कह रहा था कि जब वो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भाषण देने गए थे, पहले तो उनको भाषण देने का अनुमति ही नहीं मिला था, ये कौन आ गया करके, क्योंकि उनके पास भाषण का इन्विटेशन नहीं था। पर हार्वर्ड के एक प्रोफेसर उनके बारे में लिखते हैं कि भाई इनको परिचय मांगना, इंट्रोडक्शन मांगना, सूरज को अपना परिचय देने के लिए कहना जैसा मूर्खता है। ये ऐसे प्रकांड विद्वान है, इसको कोई परिचय की आवश्यकता नहीं, इनको भाषण देने दीजिए। तो जब पहली बार भाषण देते हैं तो लोग इतने मंत्रमुग्ध होते हैं कि 3-3 बार उनका भाषण होता है 10 दिन में। और उस भाषण में सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कहते हैं कि मैं इसलिए गर्व करता हूं कि मैं उस समाज से आता हूं जहां हम केवल टॉलरेंस की बात नहीं करते हैं। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स जो हुआ था 1893 में, उसका केंद्र विषय था, सेंट्रल थीम था टॉलरेंस। हम सभी एक दूसरे को टॉलरेट करना है। तो विवेकानंद ने कहा कि हम टॉलरेंस की बात नहीं करते हैं, क्योंकि टॉलरेंस में एरोगेंस होता है। मैं राइट हूं, तुम खराब हो, पर तुमको मेरे साथ बैठने देता हूं, दैट इज टॉलरेंस। हम टॉलरेंस वाले लोग नहीं है, हम रेस्पेक्ट वाले लोग हैं, एक्सेप्टेंस वाले लोग हैं। हम सबको समान आदर करते हैं, सबको सम्मान करते हैं। सभी विभिन्न पंथ, संप्रदाय, रिलीजन, सबको हम सम्मान करते हैं। हम रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस वाले लोग हैं। और आगे जाकर एक बार वो कहते हैं, हमारे यहां ये डाइवर्सिटी जो है, इसका हम टॉलरेंस नहीं हम कहते हैं, केवल एक्सेप्टेंस में भी नहीं रुकते हैं, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसका आनंद मचाते हैं, इसका उत्सव मनाते हैं। यह भारतीय संस्कृति का महानता है। इस महानता को स्वामी जी ने जो उजागर किया, उससे हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए। इस महानता को कायम भी रखना चाहिए, इस डाइवर्सिटी का सम्मान होना चाहिए। आज जब देखता हूं कि एक दूसरे को हेट भी हम करने लगते हैं, रिलीजन के नाम पर हेट होता है आज के दिन में, के नाम पर हेट नहीं होता हो, पर राजनीति तो होती है। हमें हमारे इस सारे विविधताओं के बीच की जो एकता है, उसका जो सौंदर्य है, उसका सौंदर्य का आनंद मचाने का, मनाने का जो हमारा इस देश का स्वभाव है, उसका गर्व हमेशा रखना चाहिए। पर याद रखना, विवेकानंद जी का उतना ही महत्वपूर्ण संदेश है, आधुनिक भारत को बनाना है। वी हैव टू बिल्ड ए मॉडर्न इंडिया, स्ट्रॉन्ग इंडिया। दैट इज व्हाट स्वामी विवेकानंद सेंट्रल थीम वाज।
नव्य भारत, भव्य भारत बनाना है। आज विवेकानंद जी करोड़ों लोगों को 160 साल बाद भी प्रेरणा के केंद्र है। लगभग 160 साल होने को है उनका जन्म होकर। देश के आजादी के आंदोलन में कई लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि मैं जीवन में विवेकानंद जी को देखा नहीं था, क्योंकि विवेकानंद जी की मृत्यु जल्दी हो गई। 1902 में विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई एट द एज ऑफ 39। बट गांधी जी कहते थे कि मैं जब उनका विचार पढ़ता हूं तो मेरे अंदर की देशभक्ति बहुत गुना बढ़ जाती है। इट ग्रोस मेनी फोल्ड। लाखों ऐसे नेताओं को, बड़े लोगों को प्रेरणा विवेकानंद जी ने दिया था। उस प्रकार की प्रेरणा हम सबको लेना होगा। मैं एक बात कहकर समाप्त करता हूं। रविंद्रनाथ टैगोर विवेकानंद जी के लिए एक बात उन्होंने कहा था जो हमको हमेशा याद रखना चाहिए। टैगोर ने कहा, इफ यू वांट टू नो इंडिया, स्टडी विवेकानंद। भारत को समझना है तो विवेकानंद को पढ़ना होगा। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं, विवेकानंद को पढ़ना पड़ेगा और गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो एक नई ऊर्जा, नया विजन और नया संकल्प हम सबको प्राप्त होगा। इसी विचार के साथ आप सबको और आपके प्रोफेसर्स को मुझे इस अवसर देने के लिए धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। Thank you, sir, for articulating views and ideas of Swami Vivekananda in such a lucid manner. It was such an insightful and enlightening session. I would now invite Mr. Vijay Pujari, a practicing lawyer in Delhi and an alumnus of Campus Law Center, who formerly served as the convener of Debate and Discussion Society, to moderate the question and answer session. Over to you, Vijay. I'd like to thank Professor in charge, Campus Law Center, Professor Alka Chawla, and Faculty Convener, Debate and Discussion Society, Dr. Seema Singh, for giving me this opportunity. It is a divine privilege to moderate this session. For someone who hails from same state and same organizational background, this is something that I'll cherish for the rest of my life. While I co-opt Ram Madhav ji for hailing from same state, his life continues to impact Galwan Valley, Dibrugarh, Alwar, Vadodara, and even places like Jinja Province, Madison Square Gardens, Wembley. Thank you for this opportunity. And with your permission, sir, I'll take the first question. Yeah. Yes, sir. So the first question being here is, sir, the government of India having done enough already, I believe, is it doing enough really to penetrate, to percolate the knowledges, the intellect of Vivekananda to the subaltern, say to someone from rural India? Even as of today, Vivekananda's knowledge and intellect base is confined even in the city, urban areas, to that of the Chicago Conference. So first question would be that. Okay. Don't take me wrong. Honestly speaking, Vivekananda is needed more for the urban elite youngsters today than for our countrymen. The ordinary Indian man on the street is still holding up certain value system. आप देश के किसी कोने में, गांव में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, एक रिमोट विलेज में जाइए, उस रिमोट विलेज के गरीब परिवार में जाइए और उस गरीब परिवार के वृद्ध महिला के मॉर्निंग प्रेयर क्या होता है ये देख लीजिए। वो शुरू होता होगा, गंगा मैया की जय हो, गोमाता की जय हो, तुलसी मैया की जय हो, और प्रार्थना का अंत क्या होता है देखिए, लोक कल्याण हो। This you notice it, it's an ordinary thing. Who taught her? It's a part of her culture. She may be a very less educated, less privileged, economically, socially backward person. But she retains that civilizational value system which has been handed down to her from generation to generation. So while I do appreciate
that these great ideas from Vivekananda need greater transmission to, as the questioner pointed out, to people in villages and all. They are even more important for us sitting in towns and villages, studying in prestigious institutions like Delhi University and all. It is here that we are creating people who are, just to put it, not in any personalized sense, but in a very generalistic way, I'm saying 3 M's: money making machines. What we are producing are money making machines. What we should be doing is man making machine. It is here that Vivekananda's ideas have greater relevance, greater traction. But yes, those greater, wider concepts should reach the last man. Government is doing its bit, but beyond, outside government, Ramakrishna Mission hai, jo Swami Vivekananda ne khud shuru kiya tha. Through Ramakrishna Mission, lot of effort happens, and many other organizations also spread the message of Swami Vivekananda. Very interestingly, Bharat में अधिकतर गांव ऐसे होंगे जहां 2 या 3 स्टैट्यूज आपको मिलेंगे, एक गांधी जी का, एक अंबेडकर जी का, और तीसरा विवेकानंद जी का. ये 3 स्टैच्यू के नहीं रहने वाले गांव बहुत कम मिलेंगे. तो विवेकानंद जी भी उतना ही व्यापक गांव-गांव तक पहुंचे हैं, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट that his message reaches the urban educated youth of this country. Thank you. Thank you, sir. Sir, the next question is about the patriotism, sir. The traditional understanding of patriotism is slightly different from what is actually professed by Swami Vivekananda. So what do you feel about the difference, sir? And is it any closer to the traditional patriotism that is expected out of the present modern day Indians? Look, patriotism, as we understand it, is a very, very Western European notion of loving your country, the political entity. But what Swami Vivekananda said was not just about any, jingoistic understanding of your patriotism. Like, your patriotism should not actually help in you identifying more enemies. Your patriotism should be such that it should allow you to conquer more hearts. That is the Indian understanding of patriotism. हमारे यहाँ पेट्रियटिज्म का अर्थ 3 भाग होते हैं. हिंदी में कहता हूँ क्योंकि इसके इंग्लिश इक्विवेलेंट कहना थोड़ा मुश्किल है. Yes. स्वधर्म निष्ठा means, as I said, you have to have your grounding, your respect, your faith in your civilization, your culture, or value system. That is one ingredient of it. Second is Swadesha Bhakti, your own motherland, your own country. Towards that, you have utmost reverence. Number 3, Swabhiman. You should have self-respect. These 3 together constitute what you call as your Desh Bhakti. So here, that Swadharma Nishtha, once you are grounded in your value system doesn't allow you to hate anybody. If you are hating anybody in the name of your nationalism, your patriotism, you are following the European idea of patriotism or nationalism. So our idea of patriotism is Sarvesham Avirodhena. We hate none. We strive for our country. But in the process, it's only one step towards, striving for the welfare of the entire mankind. Let me take one more minute here. It's important to bring in Rishi Aurobindo also. Rishi Aurobindo, whose birth anniversary falls on 15th August. ऋषि अरविंद का जन्म 15 अगस्त को हुआ था. तो 15 अगस्त को भारत की आजादी हुई थी. तो he gave a very important radio message on 15th August 1947. In that, he says something very important. He says, look, why is India becoming independent today? What is the whole purpose and meaning of it? He says, number 1, to of course give freedom to its people. But freedom, he makes a very important distinction. Freedom doesn't mean just freedom from the British rule. Freedom means freedom from hunger. Freedom means freedom from oppression.
Freedom means freedom from exploitation. Freedom means freedom from fear. That is freedom. May I ask you, today, are we treating all Indians equally? If we do that, that is freedom. If we say that somebody is a lower caste, upper caste, this caste, that caste, and then we start treating them that way, that's not freedom. Maybe political freedom is there, but where is the social freedom? How we treat our women? Do they have the real freedom? That is what is freedom. What does freedom mean? महात्मा गांधी यूज्ड टू से कि मैं उस दिन को आजादी का असली दिन मानता हूं जब रात को 12 बजे इस देश में एक महिला अकेली चौराहे पर घूम सकती हो. One interpretation of it is it could be that okay, he was talking about the security of women. Yes, रात को 12 बजे भी तो security चाहिए, but he was not only talking about security. He was talking about our mindsets. आप अगर एक रात को 12 बजे एक लड़की को अकेले देखते हो, आपके दिमाग में क्या चलता है? वो प्रश्न है. अगर आपका दिमाग ठीक चलता है ना कि नहीं, जैसे एक लड़का 12 बजे घूमता है, लड़की 12 बजे घूमती है, उसमें क्या फर्क है, क्या अंतर है, ये सोच होता है ना, that is the real day of freedom. But the day you start thinking that it must be a fallen woman, because what business has she got to roam about at 12 o'clock in the night, then no freedom. That freedom is what he talked about. But he said, first step is for India to actually accord that freedom to all its citizens. But second step is India's freedom, independence is not just for the sake of Indians alone. It is for bringing that light of freedom to all the communities, peoples of Asia and the entire world. You have to spiritualize the entire world. When you want to spiritualize the entire world, where is the place for any hate? हाँ ठीक है, पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत झगड़ा चलता है, क्योंकि हम एक हेट के आधार पर दो देश बनाया है. पहले हेट जब समाप्त होगा, वो भी जो झगड़ा भी समाप्त हो जाएगा. Remember, partition of India in 1947 was not just the partition of lands, it was partition of hearts. दिलों में एक दरार पैदा हुआ है, उसको समाप्त करना होगा. जब समाप्त होगा तो ये समस्याएं समाप्त होगी. बट इंडिया का सोच हमेशा वही होना चाहिए कि मैं लोक कल्याण के लिए काम करूंगा. जो इस देश की सामान्य गांव की महिला कहती है, उसके लिए काम करूंगा. वो देशभक्ति है, क्योंकि यह देशभक्ति टेरिटोरियल नहीं है, इट इज स्पिरिचुअल, इट्स इमोशनल. तो उस प्रकार की देशभक्ति को ही हम विवेकानंद जी का जो डेफिनेशन है उसको स्वीकार करना होगा. थैंक यू. Yes, sir, allow me to push this question a little further. How far do you think are we from that promised land, that idea of India? It's a long journey, but better taken. I mean, rather than discarding it, thinking it is too difficult, you must take it because that is the destiny. मैंने ऋषि अरविंद का उस भाषण का जिक्र किया था. उस भाषण के अंत में वो एक लाइन बोलते हैं. ये सब कहते हैं कि आपको दुनिया को स्पिरिचुअलाइज करना है वगैरह वगैरह बोलते हैं. बोलने के बाद अंत में कहते हैं, इट इज आवर डेस्टिनी, वी आर हियर फॉर दैट. ठीक है, आज डिस्टेंट ड्रीम लगता है, आज इंडिया को मॉडर्नाइज होना है, बहुत लंबा चलना होगा. मैं आज कल पेपर्स में पढ़ रहा था, हमने एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया, सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है. हमारा नेवी ने उसका अब टेस्ट फायरिंग किया है, विच कैन हिट ए टारगेट 500 किलोमीटर अवे and which can travel at 3 times faster speed than the sound. But do you know where is China today? चाइना पिछले जुलाई में एक मिसाइल टेस्ट फायर किया है जो पूरे ग्लोब को सर्कल करके वापस आके चाइना का ही एक निश्चित टारगेट को एग्जैक्टली जाके हिट किया है, और उसका स्पीड 7 times द साउंड स्पीड है. लुक एट द गैप, नॉट जस्ट विथ अस बट इवन विद अमेरिका. तो दुनिया में एडवांसेस उतना हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक एडवांसेस उतना हो रहे हैं, हमें बहुत करना होगा. उससे दो निष्कर्ष, अरे हम कहाँ है साहब, बैठ जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते. नहीं, इंडिया को पराक्रम से इस दिशा में जाना होगा. क्योंकि मैंने चाइना का उदाहरण इसलिए दिया, आज से 20 साल पहले चाइना ऐसा कर सकता है ये कोई सोचा तक नहीं था. Nobody had even imagined
because China used to be considered an underdog. But look at them in 20 years, what they achieved. So countries, if they build the determination within them, they develop the determination, they can achieve great things. In India's case, India has everything that is required to emerge as a strong nation. But problem is, we are too lethargic and too self-centered. Thank you, sir. That was a great answer, sir. So we are taking a couple of public questions, sir, before we end the session. So we'll have Kajal Sonkar coming in with a public question. Thank you, Vijay. Thank you so much, sir, for addressing us. Sir, my question is that in a lecture, Swami Vivekananda ji said that India should conquer the world through its spirituality. And so my question is that how should India, like what we as youth can do, and how can we conduct ourselves in this regard, that we eventually conquer the world with spirituality of India? Okay. First of all, conquering the world का अर्थ तो हम सब समझते हैं. It's not any militaristic conquer. I think these ideas should reach all corners of the world. So what we should do is, first of all, you have to stand up for those ideas. I mean, if we do not respect our great value system, our great spiritual ideas of this land, how can we expect them to travel to other parts of the world? As I said, when Swami Vivekananda went and spoke about these great things, somebody stood up and asked him this simple question: what about your people? And he had to finally admit that my people to kya kare, my people to kara hua hai. तो पहले हम अपने जीवन से शुरू करना है. चाइनीज में एक बहुत बड़ा सेइंग है, ओ गॉड रिवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड. हे भगवान, दुनिया को सुधारो. तो ये तो सब लोग कहते हैं. पॉलिटिक्स में तो हर नेता कहता है, दुनिया को सुधारने के लिए ही हर नेता का जन्म होता है पॉलिटिक्स में. But the Chinese saying has a second word. It says, oh God, revolutionize the world, begin with me. मेरे से शुरू करके ठीक करो. So for spiritualizing the world, you have to spiritualize yourself. Spiritualize करने का अर्थ ये नहीं है कि आप पूजा अर्चना करते रहो, नाक बंद करके meditation करो. वो spiritualization नहीं है. Spiritualization is a mental evolution, where you overcome all sorts of evil thoughts, evil ideas, evil practices. As I said, इस देश की एकता का भंग जो भी है, उनसे ऊपर आना पड़ेगा. इस देश के सभी समस्याओं के प्रति पीड़ा निर्माण होना पड़ेगा. That is spiritualization. Vivekananda was sitting in one very palatial house in America. One day, the Malikana, the house lady, came to see him. It was late in the evening, so she did not find him in the room. Then she looked for him, and he was standing in the balcony looking at the sky. She went closer to him. She found him, crying, actually shedding tears. She asked him, "Sir, what happened to you? Why are you crying? Is the room not comfortable for you, or anything lacking in facilities?" Vivekananda shows her a telegram he received from Calcutta. It was 1901. You remember, Vivekananda went second time to America again. He came back in 97, but again went to America in 1999. So he shows a telegram which says that Calcutta में प्लेग की बीमारी से हजारों लोग मर रहे हैं. तो विवेकानंद को वो टेलीग्राम देख के रोना आ गया. वहां रो रहे थे वो. That is what is called spiritual feeling. अरे किसी का दुख कष्ट देखकर आपको पीड़ा होती है कि नहीं होती है? इस देश के बैकवर्डनेस, गरीबी देखकर पीड़ा होती है कि नहीं होती है? इस देश की इकोनॉमिक सिचुएशन देखकर एक पीड़ा होती है कि नहीं? That is spiritualism. That kind of spiritualism where you have greater concern for people around you and everybody. आज तो बहस तो होने वाला है. अभी तो चलिए एनिमल राइट्स का तो बहस हो रहा है. That is one good thing as happening. But आने वाले दिनों में और चीजों का, अभी एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च पेपर रिलीज किया 2018 में, राइट्स ऑफ द रोबोस. अब रोबोस की चिंता हो रही है उनको. हमको तो ह्यूमंस की चिंता नहीं है यहाँ. तो वो जो होता है वो स्पिरिचुअलिज्म होता है, which has to begin at home.
इस देश के युवाओं का वहां से जीवन शुरू होना पड़ेगा। बहुत लोग करते हैं, आज के युवाओं को तो मैं मानता हूं कि हमारे जनरेशन से ज्यादा आइडियलिस्ट है। आप लोग more idealist than probably we are, but probably the society requires much more. That is what spiritualism is. That is how spiritual ideas go abroad. Thank you. Thank you, sir. We have Shishir Kumar Rai with the next question, sir. Good evening, sir. Thank you so much for giving us this opportunity to put forward the questions in front of you. So my question is related to what you mentioned about India being a predominantly young nation. Truly, we have 58% people under 35 years of age. But when we contrast it with the representation into the legislatures, we have very minuscule representation of young people into the legislature. So, keeping this in context, my question is a two-parter. First is, what is your subjective opinion? What is your advice to the youngsters, especially the people who will not be taking the path of mass mobilization politics, so as to contribute to this process of nation building? So secondly, do you think there might be a need of systematic change into the governance structure of the nation so as to channelize this youth energy directly into the parliament, lawmaking, and policy making? Thank you. Yes, firstly, for nation building, politics is not the only way. That part we should keep in mind. But secondly, what you are asking is a very, very important thing. I always held the view that India's politics need to need to come in tune with India's demographics. India's demographics and politics still have huge, gap between them. So, problem is politicians to जीवन भर सत्ता में रहना चाहते हैं. What to do? I mean, and I sometimes jokingly say that a politician starts talking about young people coming forward only once his son or daughter is ready. Until then, he will not say anything. So that is the nature of politics. Having said it, we need to get more and more youngsters into politics. But fortunately now, what is happening is many are coming in. The average, age of our legislatures is definitely coming downwards. I think even central cabinet's average age is below 60 now, which is a good thing. It should come further down. You know, when Obama became the president of the world's most powerful country, namely America, in 2009, he was just 46. And, Medvedev, who became the president of Russia in 2006, he was just 42 when he became the president of, one of the most powerful countries in the world. So youth needs to be allowed to come forward and take up greater roles in politics. But system, in that, as you rightly said, systems also should allow that. In the sense that parties should encourage more youngsters. Slowly that is happening. But I tell you, politics is something that you need to start at the grassroots. Today, problem is politics, bolte hi many youngsters ke mind mein to become an MLA or MP is politics, you think. I mean, not you personally. I'm saying youth thinks. Politics starts at the village level, at the grassroots level. Youth need to make greater intervention at the lowest levels. Today, we need more and more youth participating in the political activity at the grassroots. We need more sarpanches. We need more district, elected body members. Even if it is not going to be direct electoral politics, we need more NGO activism in this country. It's another matter. I came across a statement that civil society is a danger. No, I consider NGOs and civil society activism are very important. They are very important controlling aspect over political leadership in the country. So we need grassroots political activism. So youth should come forward in that area. They are coming forward, but more and more youth should come. आज क्या होता है, लंदन में कोई पढ़ के आया है, किसी गांव का सरपंच बना है, तो एक दो उदाहरण मिलते हैं. इसलिए मैन ऑफ द ईयर, वुमन ऑफ द ईयर में आपको इंडिया टुडे में मिल जाता है. क्यों? नहीं, ये लंदन में पढ़ के आया है, गांव का सरपंच बना है. पर गांव का सरपंच तो इस देश का हर युवक को बनना चाहिए. So political intervention at the grassroots, youth should now take it into their hands, and that way how youth should take control of the politics of this country. That is very important. As you grow, you will rise in politics. Thank you. Thank you, sir. So we have one question from Toshita Joshi.
This is the penultimate question, sir. Good evening, sir. So my question to you is that Swami Vivekananda has been the foremost proponent of having a balance between science, culture, and spirituality. But right now, the youth today views them as an antithesis of each other. Also, a spiritually inclined person is viewed someone who is anti-science. So, what is your take on how these three domains they interact with each other? And the second part is that is Asmita Jagaran the need of the hour to solve this particular problem that has arisen? First of all, you have referred to Vivekananda's scientific approach and all. In fact, in that London speeches, in one lecture, he says that, you see, I am challenging today. Whatever is unscientific in my religion, I should discard. But every religion should do that. What is not scientific has no place in religion or spirituality. Science and religion cannot be mutually antagonistic, divorced from each other. They have to go hand in hand. In India, it's a very old tradition. Here it is said, Jnanam Vijnana Sahitam, means here the spiritual knowledge, its basis is in scientific knowledge. That which is unscientific, we must discard even to this day. Whatever is Andhavishwas, don't give any importance to it. That vibrance this society should keep. But don't think, if you are a scientist, don't think that the spiritual knowledge, it's all senseless. It has no scientific basis. I don't go into astrology and all. They are very, very highly evolved sciences in this country. But I tell you, you should read Ramayana, original, Valmiki's Ramayana. When Ram was returning from Lanka with Sita to Ayodhya, he was supposed to have used Pushpaka Vimana. Now, there can be any amount of debate over whether Pushpaka Vimana existed or not existed. We don't know. I mean, it's a bygone era. But if you read those 30 shlokas, the description that Valmiki gives is exactly the aerial view. Exactly where Kaveri river is. Exactly where he found Jatayu. All that he describes, the entire path. How is it that several thousand, the antiquity of Ramayana is generally considered as at least, some 3000 BC. I mean, at least more than 5000 years. Somebody writing, take it as 1500 years, 2000 years. Somebody writing a book had the aerial view of it. How is it possible? So some aspects of knowledge existed. What is it? We have to find. There are universities in other countries, in Australia, in America, in medical colleges. They have the portrait of Shushruta, an ancient Indian surgeon, and the description underneath was the first surgeon of the world. Now, you had a sage who was doing difficult, plastic surgery operations of correcting the nose, correcting the ears. You had some amount of knowledge of scientific methodology, scientific practices. Ayurveda. Today, after COVID, the entire concept of healthcare is undergoing a major transformation. Until now, healthcare meant, especially in the West, it meant viruses and vaccines, diseases and medicines. That was the understanding of healthcare. But today, everybody in the West is saying, no, healthcare means not just viruses and finding vaccines. It's about healthy living. Ayurveda is all about healthy living. Ayurveda was not the science of diseases like the modern medicine. Ayurveda, the very name, is the knowledge of life, not diseases. So we had a different approach, very scientific approach, how to
lead a controlled, organized, disciplined life. A great science has developed. When we are offering tidbits of it, the world is falling flat. We offered just one aspect, yoga, to them. You look at how the whole world is mad after yoga today. 195 countries celebrate International Yoga Day. You had that scientific knowledge. So modern scientists need not discard everything that the past has offered to us, the ancient wisdom has offered to us. But at the same time, I must also caution that the ancientists should not claim that हमको तो सब कुछ पता था, हमारे पास तो सब है. This is also not the right approach. I mean, we had a particular type of knowledge, yes. This age is coming up with another kind of scientific knowledge. They are two different things. There is no need to try and prove that, Rama and Kal may be nuclear weapons. There is no point in trying to prove that. So, on either side, there is no need to be extra jingoistic. We know everything should not be the approach of the ancientists. Ancientists don't know anything should not be the approach of the modern scientists. That's how these two have to travel together. That's why Swami Vivekananda had said that whatever is unscientific in my religion, I must discard. Whatever is scientific should be the religion. That should be the approach for scientists. Thank you. Thank you so much, sir. It has been a great privilege, sir. Thank you so much for the opportunity. Now I request Dr. Seema Singh to propose the vote of thanks. Thank you so much, sir. It was truly a very insightful address, and it's a very important discussion. We came to know about several things which are quite new, especially for the young generation. Because normal perception ये होता है कि once we are talking about Swami Vivekananda, he is just a monk wearing saffron color, and he is just talking about the religious thing. But yes, you have brought out some very important aspect of his personality. वो कितने scientific हैं, उनके thoughts कितने inclusive हैं, वो कितने positive हैं, और and all above he is carrying the culture and the tradition of this Indian culture. इसीलिए जब वो अमेरिका जाते हैं और जहाँ पे उन्हें बार बार उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि यू ब्लैक गेट आउट, वहां पे शिकागो में वो धर्म सभा को संबोधित करते हुए स्टार्टिंग लाइन में बोलते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. तो ये भारत की कल्चर था जिसको कि स्वामी विवेकानंद में पूरी दुनिया में कैरी किया अपने थॉट्स के साथ. और चूंकि बिकॉज ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर आइदर द लॉ फैकल्टी मेंबर्स एंड द लॉ स्टूडेंट्स, सो आई वांटेड टू ब्रिंग दिस थिंग आल्सो टू द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स that in the Constituent Assembly debate also, there at several point of time, different speaker mentioned Swami Vivekananda, and I will take few names, Mr. R.V. Dhulekar, Mr. Upendra Nath Burman, B.H. Kharedkar, Manu Mohan Das, Lakshmi Kanta, and H.V. Kamath. These are the persons who have mentioned Swami Vivekananda during the Constituent Assembly debate, especially in the framing of the preamble of the Indian Constitution. And we all are aware that Article 1 of the Indian Constitution, which says India, that is Bharat, shall be a union of a state. So obviously, if you want to understand Bharat, if you want to understand the idea of Bharat, तो जैसे अभी सर ने बोला रोला को, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला है कि अगर आपको भारत को समझना है, अगर आपको भारत को जानना है, तो आपको स्वामी विवेकानंद को जानना पड़ेगा. तो even in the legal interpretations, if we want to understand the philosophy of India, we must know the thoughts of Swami Vivekananda. With this, I just conclude my vote of thanks, and I am extremely thankful to you, sir, and on the behalf of the entire Campus Law Center and Debate and Discussion Society, I extend my thanks to all of you, and we are very privileged that we got this opportunity to hear you on this very auspicious day. And I also extend my thanks to all the faculty members, my seniors, my colleagues, and all the dear students, and all those who are watching us live on our Facebook page. With this, I just conclude this session. Thanks to all of you. Thank you.